Hey guys, welcome to the weekly roundup of Pakistani dramas with Orange Wall TV. My name is Aisha. आज हम बात कर रहे हैं मैं, काबली पुलाव, झोंक सरकार, मन्नत मुराद और इश्क मुर्शिद की। गैर मेरे किस काम के। मैं कि इस एपिसोड ने मुझे बहुत ही कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, शुरू होता है कशमाला जैद को कन्फ्रंट करती है कि तुमने मेरी लाइफ तबाह कर दी, तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, मतलब उसकी वजह से एंड हो रही हो रयान के बिना। 15 मिनट में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाती है। शी गोज टू हर फादर एंड सेज यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि इस दफ़ा हम क्यों उनसे माफ़ी मांगे या जैद क्यों माफ़ी मांगे, इस दफ़ा जाफर अंकल और मुबशरा को और रायान को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, और व्हेन द फादर आस्क्स के बट विल यू बी ओके विदाउट रायान, शी इज़ लाइक हाँ, क्योंकि मोहब्बत और इज़्ज़त में मैंने रियलाइज़ किया कि इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है एंड अगर रायान कांट कम तो आई बी सडनली ओके विदाउट हिम। ठीक है, अब ये पूरा जो प्रेमिस था ये इसलिए सेटअप हुआ था क्योंकि कशमाला को रायान से बहुत प्यार हो गया था। ठीक है, उसके अब्बा ने बोला कि उसने जब ये रिश्ते की बात की तभी जैद और मुबशरा के रिश्ते की बात हुई। अभी तक जितना भी कुछ हो रहा था ये सारा कुछ रायान और कशमाला की लव स्टोरी के लिए था, और उसमें भी कशमाला was interested in Rayan was never that interested in कशमाला। एंड सडनली कशमाला इज लाइक ओ आई एम सॉरी, मेरी ईगो और मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है, सो टू हेल विद रायान एंड फैमिली, अब हम भी आडा लगाएंगे। और यहाँ से बाकी की एपिसोड शुरू होती है। मतलब अब जो आसिफ है ही इज गोइंग टू अब उसकी और जाफर की लड़ाई होगी। अब उसने ऑलरेडी जाफर को कह दिया कि मुबशरा आके कशमाला से माफी मांगे। आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट वेयर आसिफ इज सेइंग टू कशमाला कि हम जैद को ये बातें नहीं बता सकते, जैद को हमने ना गिल्ट में ही रखना है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली इज दिस, like कोई देर इज एंड कशमाला एज वेल, राइट? कशमाला का तो हमने देखा था कि शी वॉज मोर इनोसेंट, टीम जैद, ऑल ऑफ दैट, एंड सडनली शी इज ऑल्सो लाइक हाँ अपने भाई को गिल्ट में रखते हैं और उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड लाइक हु थिंक्स लाइक दिस। कि ये जो ये ड्रामा है दिस स्टार्टेड बीइंग ऑन एयर जब सिर्फ शुरू की कुछ एपिसोड शूट हुई थी। मतलब ये आई थिंक दे मेकिंग अप द स्टोरी एज दे गो अलॉन्ग, which is why it has been so dysfunctional so far, the drama. On the other side, मुबशरा का वही जो उसकी फ्रेंड है जो पुरानी जो तीली लगाती है वो उसको कॉल करती है और कहती है कि वो जैद इज हैविंग एन अफेयर विद मिसेस हाशमानी और समबडीज पोती। जो मुबशरा है वो वहाँ पहुँच जाती है एंड शी गेट्स अ फिट ऑफ एंगर। वहाँ पे एज हर लक वुड हैव इट, मोहिब और जो उसकी, मैं तो उसका नाम भी भूल गई, जो उसकी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी मुबशरा की, वो बैठे होते हैं। मोहिब को तो ऑब्वियसली ही विल एंजॉय जब मुबशरा का पागलपन नजर आएगा, तो मुबशरा फुल पागलपन में उस बंदी पे शाउट करती है, जैद पे शाउट करती है, पूरा सीन क्रिएट होता है एंड बेसिकली जैद टेल्स हर टू कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट मोहिब, ही विल नॉट टेक हिज शिट। मुबशरा गुस्से में होती है, घर जा रही होती है, ड्राइवर पर चीखना शुरू कर देती है। ड्राइवर की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो गाड़ी रोक के कहते हैं भाई आपने जाना है आप जाओ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस शिट फ्रॉम यू। जेल पहुंचते हैं, वापस आते हैं, रायान और जाफर और मुबशरा बैठे होते हैं। जाफर को आसिफ वाला प्रेशर भी होता है, ये ड्राइवर वाले इंसिडेंट का भी प्रेशर होता है। ही बेसिकली टर्न्स अराउंड एंड गिव्स इट टू मुबशरा। ही इज लाइक तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इंसान की बच्ची बनो एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। जो मुबशरा है वो और पागल हो जाती है। लाइक मुबशरा इज लाइक हाउ कैन यू सपोर्ट द 2 टके का ड्राइवर एंड नॉट मी एंड दिस एंड दैट। खैर उनके यहाँ एक शोडाउन होता है। फिर जो अगले दिन जो जाफर है वो मुबशरा को शॉपिंग भी नहीं जाने देता बिकॉज ऑब्वियसली ही वांट्स नाउ हर टू नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ पब्लिक एटमोसफेयर, बिकॉज ऑब्वियसली वो जैसी पब्लिक में जाएगी यहाँ तो वो अपने आप को एम्बैरस करेगी या वो फैमिली को एम्बैरस करेगी एंड इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर हर मेंटल हेल्थ। ऑल्सो जाफर अंकल डजंट रियली डू मच फॉर हर मेंटल हेल्थ। वो मतलब अक्सर उसको ताने वाने दे ही रहे होते हैं फुल। इन एनी केस जो ड्रामा है वो अब उस पॉइंट पे है जहाँ पे मुबशरा hates Zaid. I think Mubashara is going towards a little bit of a nervous breakdown. Maybe she will go towards a nervous breakdown. जो मैंने last time कहा था, I still don't understand how Zaid and Mubashara will ever be on the same page and will ever start even falling in love with each other. Like I saw that promo as well. Usually जो ड्रामों का teaser वगैरह होता है, it is
इट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ मोर इनसाइट इनटू द स्टोरी. इन दिस ड्रामा वो उन्होंने अभी तक शूट ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली इनसाइट क्या देंगे. बट इन एनी केस, यू नो, ओवरऑल अ कंफ्यूजिंग एपिसोड फॉर मी. व्हाट डिड यू गाइस थिंक? मुसव्विर हो गई आंखें. Another episode of Kabli Pulao, which was only 28 minutes long. हम ये बात कर रहे हैं कि ग्रीन ने जो एपिसोड की ड्यूरेशन है वो कम कर दिए ताकि वो 1-2 और एपिसोड्स निकाल सकें. बट खैर, आई डोंट माइंड दैट एज लॉन्ग एज द क्वालिटी ऑफ द एपिसोड्स दैट वी गेट इज गुड. ड्रामा मजीद थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है. You know, I'm not enjoying the fact that this was meant to be the journey of Haji Saab and Barbina, and you know how the cultures meet and all that. But right now there's just too many secrets, right? Biggest one being कि बारबीना ने हाजी साहब को अभी तक ये नहीं बताया कि जो बारान है वो मजदक जो है वही बारान है, राइट? अब मतलब I like in a way, like I think that you know she needs to tell हाजी साहब के क्या है, because imagine जो हमने भी टीजर में देखा भी है कि जब हाजी साहब को पता चलेगा तो उन पे क्या गुजरेगी, राइट? Like he trusts बारबीना more than anything. अभी तक वो घुमा फिरा के मतलब वो बात कर रही है, चाहे यू नो वो कहे कि घर वाले मुझे ट्रस्ट नहीं करते, मुझे इस्लामाबाद जाना है, मुझे गफार की वजह से इस्लामाबाद जाना है, वो जो भी मर्जी कह रही है. बट बेसिकली यू नो वो बारान वाला रीज़न है, एंड शी जस्ट नीड्स टू कम क्लीन क्लीन इन फ्रंट ऑफ हाजी साहब. आई मीन हाजी साहब, वी नो और वी एक्सपेक्ट हाजी साहब टू बी रीजनेबल. अभी तक ही इज़ बिन रीजनेबल. But I just feel like, you know, when he finds out from somewhere else, जो वो ढूंढेंगे, वही जो रमशा वाली वीडियो है, how will he be able to forgive Barbina, right? And the other thing is that, you know, at some point Barbina will have to make the choice between Haji Saab and Baran. Haji Saab will have to make the choice between, you know, asking Barbina to stay or letting her go. Baran will have the choice, you know, कि वो रहता है और Barbina को और pursue करता है versus कि, you know, वो बस चला जाए वापस. So we have all of these things to look forward to. I think there are only two-ish episodes left. So, you know, I hope कि ज़्यादा stretch ना करें and they nicely wrap up the drama and keep us engaged. There were a few very good scenes in the or sequences in the show, in the episode for me. One was the Barbina and Baran wala, where Barbina goes to Baran in the night, and you know she basically threatens him कि तुम अभी के अभी निकल जाओ. You know, उसपे हमने सबीना का या बारबीना का एक बड़ा डिफरेंट सा लाइक वो देखा एवटार, जो उसने अभी तक नहीं किया था, वो जो गुस्से में था, you know, when she loses control a little bit. उसके बाद you know जो सीन हाजी साहब और बारबीना का था जिसमें बारबीना कहती है कि अब मेरी बस हो गई है, you know, I want to go back. I thought that scene was also very nicely done. I really liked the scene between Barbina and Aisha, where Barbina basically, where Aisha tells her कि you know मैं तुम्हें कसूरवार ठहराती हूँ of my father's death and of my child's death, and Barbina says कि you know मेरे हाथों पे वो खून नहीं है. And I think, you know, and how she then tells her about Ghaffar and all of that stuff as well, and that is why, you know, and when I was watching that scene I was like, oh, you know, so that's why basically कि जो आयशा हाजी साहब को कहती है कि आप जो हैं वो इस्लामाबाद चले जाएं. And I think, you know, अब आयशा और सिचुएशन को ठीक करेगी. I think जो उसकी दूसरी शर्त है that will also be a positive one. So you know, I'm hopeful about that. The one thing I was confused about, and you know, help me if you can here. You know, वो लोग मजदक को रखना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम हमारे घर में, you know, for हिफाजत and everything. From what I remember, इनके घर में एक बेटा भी तो था इन बहनों का, जो शुरू में आता है, जो शुरू में बारबीना की फोटो लेने की भी कोशिश करता है. I wonder where he has gone, because उसका तो वो सीन ही खत्म कर दिया ना वो लड़के का, वो तो अब नजर ही नहीं आया काफी टाइम से. So I wonder who he was. But overall for me, I think, you know, Haji Saab needs to find out ASAP too many secrets, and also will Haji Saab be able to forgive Barbina for this secret, right? Anyway, what do you guys think? Episode interesting थी, you know, काफ़ी movement हुई episode में. जो ASP अरसलान है वो और जो उसके साथ आई थिंक जो दो उसके मेन लोग हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी जो डेथ है उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है. मुख्तारे की डेथ के ऊपर पीरन एंड मीरल फुल पॉलिटिक्स खेलते हैं
और उसके नतीजे में ये जो है ASP अरसलान ये सस्पेंड हो जाते हैं, और हमने टीजर में देखा है कि वो मतलब अगले एपिसोड में जेल में भी है या क्या। खैर जो सस्सी है उस बेचारी के फिर से एज ऑलवेज मतलब डेढ़ दो सीन, आई डोंट नो व्हाई हिबा बुखारी chose to do this drama, because literally there is no margin for her in this drama. Much stronger than her character is Nouri's character, which is played by Mamia. Mamia again sends a message to Sassi to let her know कि जीनिया के साथ क्या हुआ था। वो भी अब मुझे लगता है कि वो शायद एक और केस हो जो ASP अरसलान कर सकता है, बट आई थिंक अब वो क्योंकि अब वो सस्पेंड भी हो गया, अब मुझे लग रहा है कि इट हैज़ टू बी एन इनसाइड जॉब नाउ आई थिंक ASP अरसलान हैज़ टू डू समथिंग टू फाइंड आउट इन द हवेली। आई थिंक जब वो पकड़ा जाएगा तब उसके हाथ कुछ लगेगा या क्या, बट ही हैज़ टू बी स्मार्टर नाउ। आई थिंक मीरल एंड पीरल राइट now have the upper hand. But definitely, I'm sure something will come up because, ASP Arsalan is obviously the hero. And but I just hope that it is something smart. I hope it is something quick. I don't want it to stretch and stretch and stretch. There was one scene that I particularly liked, जब जो ASP Arsalan है वो फारिग हो जाता है तो बाहर कुंदन मसीह उसको आके बताता है कि जो मोराल है नफरी का वो बहुत ही डाउन है। तो ही गोज अरसलान गोज आउट एंड फरहान सईद की बड़ी अच्छी एक्टिंग है उस सीन में, जिसमें वो अगर आपको याद हो, आपने अगर चक दे इंडिया देखी हो तो शाहरुख खान का एक बड़ा फेमस सीन है 70 मिनट का। तो मुझे वो उसकी याद आ गई, जैसे वो फरहान सईद कहते हैं ना कि कितना टाइम लगता है जोश में, हमें पुलिस में जोश चाहिए और हम चेंज कर सकते हैं, ऑल इट टेक्स इज अ मोमेंट्स करेज। सो बड़ा मुझे उसका वो शाहरुख खान वाला याद आ गया। आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड टू सी कि फरहान सईद इसके बाद व्हाट डज ही डू। वेरी डिफरेंट ड्रामा दिस वाज, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग some more romance from him in this show and in other shows as well, because he's really good at that. जो हवेली पॉलिटिक्स है उसमें वो जो मीरल था, जो पीरल के अगेंस्ट हो रहा था, वो तो अब उसमें एंगल वो तो मुझे नजर ही नहीं आया। जहांदाद की उन्होंने एक दफा दोबारा बेइज्जती की है। आई थॉट कि जहांदाद जो है वो बड़ा एंटाई हो जाएगा मीरल, बट वो अभी तक हुआ नहीं है, सो आई एम अ बिट सरप्राइज्ड अबाउट दैट। So another episode of Ishq Murshid, as I was saying before as well, जो ये ड्रामा ये थोड़ा सा प्रीची होता जा रहा है। although इस ड्रामे इस वाली एपिसोड में हमें थोड़ा सा वो जो था ना वो, एज आई सेड बिफोर, ये जो ड्रामा ये प्रीची होता जा रहा है थोड़ा सा, स्पेशली फ्रॉम द शिब्रा साइड। तो खैर जो शिब्रा की बहन है, शी कन्फ्रंट्स द फादर एंड बेसिकली सेज कि आपने मेरी शादी क्यों की अगर आप इतने अपराइट थे और अगर आपने इतना ही सच्चाई करनी थी। फादर डजंट रियली हैव एनी आंसर्स। शिब्रा पहुंच जाती है और वही बाप को तसल्लियां देने के लिए या क्या। So that was one part. There was more progress on in the family of शामिर। वहाँ पे जो वो पॉलिटिकल वो जो है शबीर जान का कैरेक्टर, वो आके उसके बाप को थ्रेटन वगैरह करता है और वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में बेसिकली वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उनकी गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश कर रहा है या क्या। एंड वी सी अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ शामिर, विच इज के ही कैन प्ले द बैड गाय। ही on one side he's the goofy Khuda Baksh, and on the other side he's a very influential, very powerful Shamir, and it'll be interesting to see that jab these two personalities collide, and at sooner or later Shibra will come to know and Shibra will find out the truth. So how will Shibra take it, and how things will progress. There were one or two very cute scenes with Shamir and Shibra. I'm not still 100% convinced about their chemistry yet, but I will give it a further few weeks to see if I'm enjoying their chemistry. Bilal Abbas Khan was very good as Shamir and as Khuda Baksh in the episode. The rest of the cast was a bit okay for me this week. So another interesting 2 episodes of Mannat Murad. अब हमें वो पता चलना शुरू हो गया कि जो हम शुरू से कह रहे थे कि when did they fall in love, and when did that it was too quickly for us. Well, it seems like it was way too quickly for Mannat and Murad as well, क्योंकि अब जो उनकी फैमिली वाली सारी सिचुएशन है वो तो सेटल हो गई है, बट मन्नत और मुराद के जो अपने डिफरेंसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। जस्ट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, क्विकली टॉकिंग अबाउट जो वो सीन था जिसमें बड़े भैया
and family visit Murad's family. I thought the dynamic was very interesting, where the mother starts, on a different tangent altogether. And Murad, at one point, I think he says, कि, ये जो situation है, ये beyond repair हो चुकी है. But बड़े भैया, still sees through कि वो बड़ा responsible and he's very loving towards his family. So hopefully he will be very loving towards Mannat as well. Coming back to the Mannat and Murad thing, अब ये problem आ गई है कि you can tell but they're so different, right? Like Mannat is from such a privileged background. She's never had to worry about money. On her first day of work, they got her a car, all of that stuff. And now Murad is completely different, but वो shopping अब वो वैसे ही करवाएगी जैसे शॉपिंग अब उसको वही एक्सपेक्टेशन है कि वैसे ही करवाए जैसे मन्नत को आदत है. बट मन्नत इज ऑल्सो नॉट थिंकिंग कि यार दे आर नॉट एज वेल ऑफ एज वी आर. तो मतलब वो खुद भी नहीं ये बात सोच रही. सो आई थिंक दीज डिफरेंसेस विल क्रॉप अप. इवन वो जो कपड़ों वाला आएगा कि Mannat's brother wants her to wear Mannat's mother's जोड़ा जो मुराद है, his mother wants her to wear उसकी अम्मी का जोड़ा. सो आई थिंक ये चीज़ है ना कि बड़े भैया क्या चाहते हैं और मुराद की अम्मी क्या चाहती हैं और मन्नत क्या चाहती है और मुराद क्या चाहता है. आई थिंक देयर आर like 4 different angles and 4 different tangents altogether. So it'll be interesting to see how they bring everything together. I'm sure end यही होगा कि love conquers all. But I hope that it's that they don't drag it और ये बार बार इस तरह मतलब हर छोटी छोटी चीज पे ना दिखाएं. that they maybe like they can just take 2 or 3 main issues and just play with them rather than like हर बात पे ऊंच नीच. In the sisters world, वो शौकत वाला ट्रैक तो बिल्कुल फालतू था इस वीक. जो फैसल और आई थिंक इतरे थे वो जो फैसल अली सफीना वाला जो रोल है उसकी जो बॉस है उसके कुछ और सीन्स थे. आई थिंक दिस डेफिनेटली समथिंग हैपनिंग देयर. द बॉस इज आइदर इंटरेस्टेड इन हिम. अब वो दुबई का ट्रिप भी है. सो आई थिंक वहाँ पे उस एंगल में कुछ है. आई थिंक द बॉस इज गोइंग टू प्रे ऑन हिम और समथिंग. उसने एडवांस भी दे दिया है. सो आई थिंक वो मुझे पता क्या वाइब आ रही थी, वो जो जुदाई फिल्म है ना श्रीदेवी वाली, उसकी वाली थोड़ी सी वाइब आ रही थी मुझे. एंड यू कैन एंड वो थोड़ा सा जो इतरत है वो खुद भी थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती है उसकी वो मैडम की बात सुन के. So that for me right now is like one of the most interesting angles in the drama. So what did you guys think of these dramas? Let us know in the comments below. Like, share and subscribe to Orange Wall TV. We will see you next week. Take care.